We were discussing the chapter chemical effects of electric current, in which we discussed about the electroplating. We discussed electroplating definition. We discussed that when we want a coat of a superior metal, very thin layer of the superior metal on the other metal surface, that is called the electroplating by passing of the electric current. Okay, this was the definition of the electroplating. The coating of the metal surface. Electroplating, we had discussed the coating of the metal surface with the thin layer of other superior metal by passing of electric current, that is called electroplating. Today we will discuss the uses. I even told you how we can do. Like suppose yesterday I told you if we are supposed to take the, यहाँ पे we will take the copper strip, ठीक है. Other one we can take, अगर हम copper की ही इसके ऊपर coating चाहते हैं, if we want to coat this one, so we will make this rod as a, ठीक है, तो हम इसको like this, ठीक है. When we will pass the electric current जिसकी हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे if we are taking the copper, so here we will take the copper sulfate solution and this thick layer, thick rod जो है, that is also copper. It will releases the copper ions into it and it will move towards the negative rod and coating will be done. This is electroplating. Electroplating means the coating of the metal surface with the other superior metal. ठीक है, we use in the number of the ways. अभी हम uses discuss करेंगे, then it is clear to you. Two uses of electroplating are there. Number one, जो use है, that is you can say the decoration. Two uses, main two applications we are using of electroplating. Second is the protection. These two main uses of electroplating. One is decoration and other one is protection. Write down the first point. Your first use, that is decoration. Second is protection. Now, in case of the decoration, how we will decorate the material? मतलब where electroplating is used in case of the decoration. All of you are familiar with the jewelry, है ना? All of you know the silver as well as the gold jewelry is there. But still, gold is also very expensive. Silver is also expensive, and some of the people, they are not able to afford it. So how they can do it? So what they will use, how the in market, the different kind of jewelry, gold and silver, how it is present. So what is that one? That is electroplated. That means that is the coating है, ठीक है. Gold coated है, gold electroplated है, या silver. In our houses, sometimes all of you have observed in case of the when the Diwali occasion is here, तो वहाँ पे क्या होता है? We are using the silver bowls. That is not proper silver, because proper silver is very costly. आपने कभी भी देखो तो you can observe that कि उसमें जो है that is a mixture और coating है, coating of that silver है, ठीक है. तो decoration में we can write down कि less expensive, as we know gold and silver, note it down, as we know gold and silver is very expensive, as we know gold and silver is very expensive. So less expensive metal is coated with, less expensive metal is coated with silver and gold. Okay, silver and gold jewelry is very expensive, so less expensive metal is coated with the silver or gold. Okay, so we can use it. Clear है बेटे? ठीक है. प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन में क्या होता है? All of you know that iron is like iron is just as kind of the metal which can rust easily, है ना? How we can protect iron? हम iron को कैसे protect कर सकते हैं? Sometimes we need iron, हमें iron ही चाहिए, but we want कि it should not be rusted, ये rust नहीं होना चाहिए. Then what we will do? उस केस में हम protect करते हैं. Iron is coated with zinc, nickel,
chromium. Iron is coated with nickel, zinc, chromium to prevent rusting. Because iron, nickel and chromium do not corrode. They will not get rusted. So to prevent it, example we can see, आप लोगों ने, all of you had seen the taps in your house. Sometime when we are scrubbing it very harshly, तो उसके ऊपर से silver coating हट जाती है ना? All of you observe, ठीक है? तो what is that one? That means the base is something else. उसके ऊपर coating है, ठीक है? इन कार्स के जो व्हील के रिम्स होते हैं जो नीचे हैं, है ना, वहां पे भी दिस इज लाइक दिस. तो अवॉइड रस्टिंग, वी आर कोटिंग विद दीज थिंग्स, बट वी नीड द सुपीरियर, मतलब हैवी चाहिए, मेटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वी कैन कोटेड द आयरन विद द डिफरेंट मेटल्स टू मेक और टू प्रिवेंट इट रस्टिंग. टू प्रिवेंशन फ्रॉम द रस्टिंग वी कैन कोटेड द डिफरेंट मेटल्स, so we can use it thoroughly. Two uses are there. One is decoration and second one is the protection. Any doubt? Any doubt? यहाँ पे anyone is having any doubts? Okay, fine. Now, when we are using the electroplating, then it is quite difficult to dispose the electrolyte. Dispose the electrolyte मतलब क्या है? What is electrolyte? क्या use कर रहे थे? Chemical reaction हो रही है. We are taking some of the chemicals in which the chemical reaction takes place. When we want to dispose it, it is a serious threat. This is the major concern. ठीक है? तो question can come also in this form कि why disposal of electrolyte is a major concern या environmental threat. किसी भी तरह से question आ सकता है कि why disposal of electrolyte is a major concern, we can say, or a threat. Major concern or a environment threat. किस तरह से this is very harmful? Why इनका disposal मुश्किल है? क्यों है? What is actually present in the electrolyte? तो हम क्या लिखेंगे? This is because in an electrolyte or the conducting solution, electrolyte or these conducting solution or these conducting solutions are acidic in nature. Acidic in nature and contain many harmful salts and contain many salts and contain many salts which are poisonous. So this is a major concern. To dispose of the electrolyte is a major concern because it contains the solutions that these are acidic in nature and these contain many salts which are poisonous. So when we will dispose it, the aquatic life will be disturbed or the pollutions will be there, water pollution, soil pollution will be there. So that's why this is the major concern. ठीक है? Anyone having any doubt? हाँ जी अनवे. Yes, Anwe, unmute yourself. मॉर्निंग मैम. मैम ये मतलब कि हमने लिखा कि दे आर एसिडिक इन नेचर, बट वो ऑब्वियस बेस हो ही नहीं सकते, मतलब कि बच्चे बेस ही तो कनेक्ट कर सकते हैं चाहे इलेक्ट्रिसिटी. वो बेस होंगे चाहे वो एसिड्स है तो दोनों ही हार्मफुल है. नॉट एक्सेस, वी ऑलरेडी रेड इन द चैप्टर. हमने पढ़ा था ना कि सॉइल, इफ द सॉइल इज मोर एसिडिक और द बेसिक, वी आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स. वेदर इट इज एसिडिक, बट मोस्ट प्रोबेबली एसिड्स डले ही होते हैं.
ठीक है, बेसिक भी हो सकते हैं. वी आर नॉट सेइंग, आई एम जस्ट हैड रिटन लाइक आई हैड रिटन दैट दीस आर एसिडिक और द नंबर ऑफ द सॉल्ट्स आर प्रेजेंट व्हिच आर पॉइजनस. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट वी विल राइट ओनली एसिडिक. So I'm just writing down ki why it is a major concern or the threat to the environment. So when we want लिखने to, के ये बेसिक होते हैं. बिल्कुल हो सकता है. इलेक्ट्रोलाइट्स है, we can take the electrolyte. हमने आपको मैंने करके भी दिखाए थे कि when we are taking the electrolyte, अगर हम soap solution ले रहे हैं और the base है तो वो भी तो electrolyte है in which the current is passed. When the current is passing through that bases or the acidic, so these are electrolytes. ठीक है. हाँ जी. मैम तो फिर लेकिन बोलो बोलो अन्वी. यही हम ये कैसे कह सकते हैं कि सॉल्ट्स आर पॉइजनस, उसमें उनमें ऐसा क्या होता है जैसे All सिट्रिक salts एसिड होता are है वो not. तो हम You are not. बच्चे, if we are taking these all salts, जितने भी salts हैं, we are not talking about the sodium नहीं मैम, जो हमने chloride. यहाँ पे लिखा है, हाँ, जो हमने यहाँ पे लिखा है कंटेन मैनी सॉल्ट्स व्हिच आर पॉइजनस. वही बोल रही हूँ. Many salts. Many salts का मतलब ये नहीं है कि only sodium chloride is a salt. Salts क्या होते हैं? अभी सिंपल सी चीज है. HCl, H2SO4, HNO3. ये तीनों हमारे पास क्या है? एसिड. इन तीनों के ये जो पीछे वाली चीज है, when they are mixing with the other one, तो they are salt. हमने इसमें ये देखो नाइट्रिक एसिड है, इनके जो सॉल्ट्स है वो नाइट्रेट सॉल्ट्स है. You will read it in the 9th or the 10th class. Sulfate salt, chloride salt. These are the families of the different salts. हर salt that is not usable. Salt का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड मैम नहीं. जैसे और अगर मैम वो जो सोल्यूशन है हमने हमने लिया है वाटर, टैप वाटर और सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, तो उसको भी डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम थ्रेट होएगा. थोड़ी बहुत तो आएगी, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग इट उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. व्हेन द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग देयर तो आयंस रिलीज हो रहे हैं. अदरवाइज वाटर के साथ तो रिएक्शन कर रहे हैं तो दैट इज तो रिलीजिंग द गैसेस. उनमें कोई हार्मफुल गैस नहीं है. बट इट इज जनरल कि जब आप प्लेटिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट्स इन जनरल व्हेन यू आर प्लेटिंग द क्रोमियम, निकल, जिंक, तो दीज आर तो मेटल्स ना. व्हेन इनकी प्लेटिंग हो रही है तो दैट मींस व्हेन वी वांट टू रिमूव दिस सॉल्यूशन, दैट इज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट if we are not disposing it in a मतलब very. ये जनरल में बोल रहे हैं कि ऐसा मेजर कंसर्न हो सकता है, वैसे ही बोल रहे हैं जनरल में. We are not using it in a very small manner. हम टैप्स यूज करते हैं, ज्वेलरी है, यू कैन से आपके कार्स के व्हील्स हैं, उस पे रिम्स होते हैं, वहां है साइकिल्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं. दीज ऑल आर इलेक्ट्रोप्लेटेड. बहुत सारी चीजें हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ यू आर यूजिंग अ वन साइकिल तो दैट इज नॉट अ थ्रेट. साइकिल इज नॉट वन. नंबर ऑफ द साइकिल्स आर देयर, number of the balls are there, number of the things are there. तो जब वो manufacturing हो रही है, it is not the one or the two quantity. When we are manufacturing these things, so it's a number of the quantity. So that means it's a serious threat because those factories जो ये चीजें बना रहे हैं, when they want to remove it, so it should be a serious threat to the environment. ठीक है अनवी? हाँ जी अवनी, unmute yourself अवनी. अवनी अनम्यूट योरसेल्फ. जैसे हमने ओहो मैम मैंने पूछना था कि जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है कॉपर सल्फेट, हाँ, तो मैम जब हमने करंट पास किया तो जितना भी कॉपर है उसमें सारा ही डिपॉजिट हो जाएगा कि कुछ बच भी जाएगा? तभी तो रिएक्शन, मतलब दैट्स व्हाई तो वी आर सेइंग ना कि पूरा थोड़े ना उसके ऊपर चढ़ेगा. सम ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि हमने कॉपर की ही रोड ली है, कॉपर सल्फेट हमने सोल्यूशन लिया, तो दैट मींस वो बैलेंस बना रहता है. तो नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर रहेगा, दैट इज हार्मफुल. सल्फेट है, दैट इज हार्मफुल. रहेगा, सारा नहीं डिपॉजिट होता. ठीक है, ठीक है जी. चलिए ओके मैम. इसके बाद चैप्टर इज कंप्लीट. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हुआ तो मंडे आई विल शो यू द वीडियो ऑल्सो. ठीक है, आई विल शो यू. क्वेश्चंस कर लेते हैं. इफ वी विल गेट द टाइम तो वी विल सी द वीडियो ऑन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक टॉपिक बीच में रह गया था, दैट आई हैव टू डिस्कस कि Bujo and Paheli, the question is there like Bujo and Paheli, they just want to curious about things कि
all these liquids, they are conducting electricity. So they are having a doubt कि all fruits and vegetables can conduct electricity or not. For this purpose, they use the potato. उसने potato को half cut करा, half cut करके then again the same things, switch लगाया, right? Like this, they did like this experiment. Her mother called. After that, she forgot to switch off. इसको switch off करना भूल गई. After half an hour or the 1 hour, she observed here the surrounding पे the green coating, green color is there, green blue coat is there. She was surprised to see this कि why the green blue patches are there. इसके आसपास dots क्यों आए? Then Paheli did this experiment with the number of times. She did it number of times, same experiment, and observed. And then they found that every time, whenever they are doing this experiment and they remain as it is, so they found that positive terminal वाली जो battery है, after मतलब उसके आसपास ये patch है. This was the great discovery for the positive terminal. वो आगे उन्होंने further use की कि नेगेटिव साइड पे नो कलर इज देयर, ओनली द पॉजिटिव साइड. दैट मींस द पॉजिटिव साइड ऑफ द वायर इट रिलीजेस सम ऑफ द कलर्स, जिसकी वजह से ये ग्रीनिश ब्लूइश कोटिंग है. ठीक है, तो ये याद रखना, ग्रीन ब्लू कोटिंग इंडिकेट्स दैट द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, हाँ जी अनवे. Then he forgot to take out the wires of the tester inserted in potato. When he came back a half an hour, he noticed that there was a greenish bluish spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other. From this, he was surprised. ये देखो green coating is मतलब green spot is there. He was surprised with this observation and along with Paheli repeated this activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. They felt this discovery was a very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery. To report they decide to report battery concealed in a box. जब हम बैटरीज को बॉक्स में लेते हैं तो दिस जो ग्रीन स्पॉट है, इट इज द इंडिकेशन कि हियर द पॉजिटिव टर्मिनल इज देयर. दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द चिल्ड्रंस मैगजीन, so they did this experiment. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. हाँ, यू कैन सी, देखो कितने सारे मतलब ऑपरेटर्स हैं देयर. ये देखो मतलब ग्लास हो गया, साइकिल्स हैं. ठीक है, दीज वी आर यूजिंग. हाँ जी अनवे, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम ये जो ग्रीन स्पॉट आ रहा है सिर्फ पोटैटो के केस में आएगा या किसी और चीज के केस में भी आएगा? सभी के केस में. दैट इंडिकेट्स दैट जहां पे ग्रीन पैच है, ग्रीन स्पॉट है, दैट इंडिकेट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पोटैटो में तो वी आर एबल टू सी, क्योंकि पोटैटो मतलब द ब्लूइश क्रीमी शेड का रहता है, तो वी आर एबल टू सी इट. So this was the great invention for those battery which are concealed in a box, जिनको हम नहीं देख पा रहे कि positive है कि negative है. So wherever the green spot is there, so it indicates that there is a positive terminal. ये वहाँ की पहचान थी. ठीक है, you can see number of the things ये बने हुए हैं जो electroplated है. ठीक है, electroplated objects. Now the question answers we will discuss. Most liquids that conduct electricity and solutions are. Who will give the answer of this question? Yes, Bani. Bani, unmute yourself. Acids, bases, and salts. Acids, bases, and salt. Most liquids that conduct electricity are acids, bases, and salt. Yes, Paramjeet, unmute yourself. The passage of an electric current passed through a solution causes dash effect. Chemical effect. Chemical effect. If you pass current through a copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. Yes, Avni. मैम नेगेटिव टर्मिनल. कैसे?
करंट थ्रू कॉपर सल्फेट, हाँ ठीक है, कॉपर गेट्स, ठीक है, ओके. Then the next one, the process of depositing a thin layer of any desired metal on the other surface material by means of electricity is called, yes Anvay, Electroplating. electroplating. Okay, second question, when the free ends of the tester are dipped in a solution, magnetic needle show deflection. Can you explain the reason? Anyone? Dipped in a solution, the magnetic needle show deflection. Why the magnetic needle show deflection when we are putting the free ends in the tester of a tester? Hanji, Anve, Hanji bolo. Because the current starts flowing. That's obvious. अगर magnetic है उसमें deflection is showing, that means the current is flowing. That's why we are able to see. Name three liquid which when tested in a manner shown and cause the magnetic needle to deflect. कोई भी three liquid जो magnetic needle show करे deflection. हाँ जी. And salt water. हाँ, tap water, salt water, acid. Lemon juice. लेमन जूस, बिल्कुल लेमन जूस, ठीक है, कोई भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है जी. थर्ड क्वेश्चन बना लेना बिकॉज डायग्राम है तो यू विल कम टू नो. फोर्थ क्वेश्चन, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप दैट इज शोन. व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशन दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो? व्हाट आर द अदर रीजंस? Circuit is not complete. Circuit is not complete. Bulb fuse. Batteries fuse. ठीक है, बल्ब में The भी current is very weak. bulb may be fused, connections are loose, circuit is not complete. Any other reason? Fifth question, a tester is used to check the conduction of electricity through liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. क्या कंफ्यूजन निकलेगी हमारे इन चारों में से? Yes, Anmol, unmute yourself. Liquid A is better conductor. A is better conductor, definitely. B में conduction कम हो रही है. Does pure water conduct? अब आपने 6 से सारे questions you have to write down in pure notebook. Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? Jayavant, unmute yourself. No. No, ma'am. If we have to make it conducting, we have to add salt. We will not Because it write. Jayavant, एक single word नहीं लिखोगे. Does pure water conduct electricity? What we will write down, explain it in a proper manner. No. तो no के आगे No, pure water will not conduct electricity. If we have to conduct electricity, then पहले we will pure have. water. First explain the pure water, why it is not able to conduct electricity. Electricity will not be conduct because there are no free ions in the pure water. Yes, no salts are there. Pure water means there are no salts, so no free ions will be there. That's why pure water do not conduct electricity. But what we can make by adding the addition of the salt or by an acid, we can make it a good conductor of electricity. Next है, in case of a fire, before the fireman uses the water hoses, they shut off the main electrical supply or for that area. Explain why they do so. Yes. Because water is a good conductor of electricity and they may get electric current. They may get when water is a good conductor because when it dissociates, it produces the free ions. So we will get the shock. That's why they will switch off, right? A child staying in a coastal region. Coastal region means the near to the sea area. Test the drinking water and also the sea water with the tester. He finds that the compass needle deflects more in case of the sea water. Can you explain the reason? Yes, Bani. And this is because there Ma'am, are many as- ions in seawater. सी वाटर में क्या है ना, तो आंसर पूरा एक्सप्लेन करो. Ma'am, as there are free ions and salt dissolved in the water. Number of the salts are dissolved in a water. Yes, Anvay. Yes, Anvay. Okay. ठीक है. Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour?
Downpour, heavy downpour means when there is a raining. So is it comfortable for him to do the electrical मतलब ये work करना? Yes. No, it is not safe for the electrician to carry out the electrical repairs outdoors during the heavy downpour, because as the water is the good conductor of electricity, he could get harm, and he can also get the electric shock. ठीक है, right. A child, sorry, Paheli had heard that rainwater is a, अच्छा rainwater is a good मतलब जो है pure form of water, है ना? हम बोलते हैं रेन वाटर जो है दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर और एज अ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी. बट व्हेन वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट और व्हेन वी वांट टू डू इट, तो व्हाई इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या रीजन है? सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर. टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन. व्हाट इज द रीजन? व्हाट कुड बी द रीजन? Yes, Anvay. मैम अगर एसिड रेन हुई हो तो फिर इसकी वजह से हो सकता है. नहीं, this is not only the reason. Yes, any other? I will explain. एक मिनट Anvay. हाँ जी अवनी. मैम क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ही वाटर के साथ मिल जाते हैं डाउनफॉल के टाइम. डस्ट पार्टिकल्स नहीं कहेंगे अवनी. आंसर आपका मोस्ट प्रोबेबली दैट इज रेलेवेंट. But what we will say, rain water is a pure water. Rain water जो होता है वो pure water है, that is a distilled water. ठीक है. But as it enters into the earth atmosphere, ठीक है, it mixes with the number of the gases. जैसे कि हमने ऑलरेडी करा है कि सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है. When it comes into the earth surface, number of the gases are there which mixes with the rain water and rain water become the impure. Because उसके अंदर salts आ जाते हैं. Number of the gases, number of the salts present on the earth surface like पे हैं, so they mixes with the rainwater and make it impure. That's why deflection will be possible. ठीक है. और Anvay, is it clear? Only not only the dust particles or something, we will write down the number of the salts, number of gases are present, which mixes with the water to form the nitric acid, sulfuric acid. Number of the things which mixes with the rainwater to make it a impure. 11th question, we will not write down in the fair notebook. Prepare a list of objects that you that are electroplated. You can write down taps, cars, trays, ठीक है, glasses, silver glass, कुछ भी jewelry you can write down. We will मतलब not write this question in fair notebook. Next question, the process that you saw in 14.7 activity is used for the purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure coppers are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of battery and why? 14.7 figure. ये वाली. What is the reason? What is the reason in this case? And which one we will take to the positive terminal? हम किस रोड को जो थिकर वन है उसको किस टर्मिनल पे अटैच करेंगे? नो वन. थिकर विल बी अटैच्ड क्योंकि कॉपर जो है दैट इज द पॉजिटिव. कॉपर जो है वो पॉजिटिव है. इट विल अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल सो दैट द जो आयंस हैं इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव रोड. तो हम जो इम्प्योर वाली रोड और जो थिकर लेंगे दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज व्हेन इट रिलीजेस इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, from that solution it will move towards the negative electrode and the coating is possible. Is it clear बेटे? यहाँ तक डाउट है किसी को?